We have one more Mariam, Mariam Khatun. She's not in the class today. So till now in this class, Rabba, we have done a few things. We have done method of preparation of haloalkene and physical properties. Okay. Other than that, we have not done anything here, and we will be starting with chemical properties of haloalkene, haloarene. वो आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में आएगा, उसका पुराना किसी क्लास से लेना देना नहीं है, है ना? And slowly what you will be doing, you will be watching lectures, और फिर आप हमसे डाउट, आपको लेक्चर के ये मिले, did you get any playlist of lectures, रबा? नहीं सर, अभी नहीं मिला आपको, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा कुछ लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग, फिर और बाकी कुछ लेक्चर्स में आप हमको जब भी बोलिएगा डाउट क्लास के लिए, तो फिर डाउट क्लास उस टाइम हो जाएगा, ठीक है? अगर वो भी नहीं हो पाया तो फिर बैकअप क्लासेस मॉर्निंग के टाइम होगा जब समर वेकेशन आप लोग का स्टार्ट होगा. देन आई विल हैव टू टीच एटलीस्ट दीज फ्यू चैप्टर्स. एक तो चैप्टर सोल्यूशन काफी सारे बच्चों का छूट जाता है बिकॉज दैट इज द फर्स्ट चैप्टर. देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दीज टू चैप्टर्स इन द फिजिकल केमिस्ट्री आई विल बी टीचिंग, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोअल्केन हालोजेन्स. ठीक है, ये बैकअप क्लासेस इसका समर वेकेशन में चलेगा, तो उस टाइम फिर आपको बुला लिया जाएगा अगर आप अभी नहीं कंप्लीट कर पाए. ठीक है, नाउ प्लीज सी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोअरेन. पहले पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन. प्लीज राइट केमिकल प्रॉपर्टीज of haloalkene. Now, in chemical properties of haloalkene, there are three major reactions that three major types of reactions that we have to study, right? Haloalkane primarily show following reaction. Haloalkenes primarily show the following reaction. Number one, nucleophilic substitution. Number two, elimination reaction. And number three, reactions with metal. Assalamu alaikum, Mariam Khatun. How are you? Fine. अच्छा, थोड़ा ना हमको डिसाइड करना पड़ेगा, आप मरियम खातून या मरियम पारकर, आप दोनों में से किसी का घरेलू नाम कोई है, घर में कुछ और बुलाता हो कोई आपको? Yes, Mariam Parker, do you have any? No, sir, but in bio class, the bio sir identify us by calling me Parker and the other one Mariam. अच्छा, आप पारकर, ठीक है, चलो, आप पारकर हैं और वो मरियम 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 खातून पहले आई थी, मरियम मरियम है और आप पारकर. चलिए, so Mariam, please write this down. Parker, you are done writing? Yes, sir. Okay, so Mariam, please see. Haloalkenes, they generally show, you have to study three reactions, and they primarily show only three types of reaction. Nucleophilic substitution, this is going to be the major part.
then elimination, and then you will be having reaction with metal. So we will be taking almost, let me see how many classes for 1, 2, and at least 2 or 3 classes will be for nucleophilic substitution. Okay, then one again class 2 to 3 class approximately for nucleophilic substitution. Then there will be one class for elimination, and उसी में शायद आपका reaction with metal भी हो जाए. Reaction with metal and elimination reactions are not very long. Then we will have one class for reactions with haloalkane. Sorry, reactions with haloarene. Reactions of haloarene. Chemical properties of haloarene. Abhi haloalkane. Mariam, done? Yes, just a minute. Okay. After this, you all will write the topic. Nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution reactions. We also call this SN. S for substitution and N for nucleophilic. Now, please write with me. A reaction in which a group of substrate is replaced by a nucleophile is called nucleophilic substitution. Yeah, this is general. Now, since we are learning about haloalkenes, so we'll be taking the example of haloalkene. And substrate means what? Can you tell me what is the meaning of substrate? Anyone? Aisha, Mariam, Parker, or Rabah? Meaning of substrate. So please write substrate meaning. Please write substrate is the organic reactant molecule. Okay, it is the organic molecule. In the reactant, we are going to have haloalkene, and that is going to be your substrate. Okay, so haloalkene we can show as Rx plus what is coming in nucleophile. Nucleophile. What is the meaning of nucleophile? Nucleophile is nucleus loving. What charge is present in the nucleus? Tell me, guys. In an atom, we have nucleus. And what is the charge on nucleus? जल्दी बताएं. Mariam, Rabah, Aisha. What charge? अच्छा one more thing. Space bar दबा के please कोई भी answer ना करें. ठीक है ना? Most of you have a habit of pressing the space bar to answer. Please don't do that. Turn the mic on properly and then answer. Then turn the mic off. Tell me, guys. What is the meaning of nucleus? What is the charge on nucleus? Yes, Rabah? Positive charge, right? And nucleophile is nucleus loving. So nucleophile will have a negative charge. And that is why it is nucleus loving. Negative charge is going to go to the positively charged nucleus. And what is going to happen? It is going to replace this. That means X will be leaving. X will be replaced by nucleophile. And you will have X negative. Okay. Now, anything with a negative charge, if you remember from the 11th standard, then you must know, if you have a higher electron density, that is a base. Bases have higher electron density. आप याद रख लीजिए कि से OH negative, right? So OH negative is what? It is a base. And generally, structurally speaking, if we say
anything which has a negative charge, it can act as a base. That is why I will write the next point. In SN, one base is replaced by another base. Then you will write next point. The incoming base is called nucleophile. It's called nucleophile. And the outgoing base is called leaving group. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. The incoming base is called nucleophile and the outgoing base is called Leaving group. leaving group. Okay. Now I will be showing you some reactions. You have to identify what is the leaving group and what is the nucleophile. Can you write some questions? All of you have written this now? Then write some questions. Please कीजिए तो, and I will be just back in 2 minutes. Okay, 1 minute में ही आ जाएंगे. Just please do this. Send the answers on my WhatsApp. If you don't have my number, then please save this. I'm writing this in blue. Okay. Please save this number. And once you're done, you will identify what is the leaving group and what is the nucleophile. है ना? आप ऐसे लिख सकते हैं. इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा और इस रिएक्शन में लीविंग ग्रुप कौन सा होगा. Please do this.
I'm going to give you 2 more minutes. Okay, Mariam Parker has sent the answer. उल्टा लिख दिया आपने, देखिए हमको तो समझ ही नहीं आया, ऐसे कैसे चलेगा? मरियम पार्कर, व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल इन द फर्स्ट केस? टेल मी मरियम, क्या लिखा है आपने? न्यूक्लियोफाइल इन द फर्स्ट केस इज OH. सॉरी, न्यूक्लियोफाइल इज OH negative OH negative. and leaving group is? Br. तो आपने ऐसा तो लिखा नहीं, आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Okay, sir, I'll make it answer. नहीं, क्लियर नहीं है ना, देखिए आप, है ना, क्लियर नहीं है। देखिए मतलब फर्स्ट वाले का आंसर, सेकंड वाले का आंसर कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है, नहीं कुछ सर्कल वर्कल कम से कम कर दीजिए, एरो दे दीजिए, ठीक है? ऐसा लग रहा है, देखिए आई नेगेटिव का आपने न्यूक्लियोफाइल किया हुआ सेकंड केस में, है ना, सही नहीं है। व्हाट अबाउट अदर्स? आयशा ने भेजा है, आयशा लिविंग ग्रुप OH, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, NG नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा NU। ओके आयशा, NU, है ना, न्यूक्लियोफाइल OH है, Br इज लिविंग ग्रुप, ठीक है, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और बाकी रबा और पार्कर, पार्कर ने तो भेज दिया, खातून, मरियम खातून एंड रबा, रबा आपसे हो रहा है, नहीं हो रहा है? अच्छा, भेजा है आंसर किसी ने, रबा ने भेजा है आंसर, तो उल्टा कर दिया आपने, देखिए रबा प्लीज सी, Br तो पहले से अटैच था, अब क्या कर दिया, Br छूट गया ना, इट इज द आउटगोइंग ग्रुप, दिस इज द सबस्ट्रेट, इनकमिंग कौन सा, इसमें क्या लग गया, OH लग गया, सो OH इज द इनकमिंग वन, और कौन भाग गया बाहर, Br भाग गया बाहर, तो Br इज द लीविंग ग्रुप। ओके सर। आपने उल्टा कर दिया, ये ठीक कर लीजिए, है ना, लीविंग ग्रुप विल बी Br नेगेटिव इन दिस केस। नेक्स्ट, अच्छा वी हैव गॉट वन मोर आंसर, मरियम पार्कर ने सेंड किया, फिर से OH नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है, सही है। मरियम खातून, आपका आंसर नहीं आ रहा है, व्हाट हैपेंड? मरियम खातून, देखिए भैया हम बोल रहे, सॉरी फोन नहीं है सर, एक्चुअली कंप्यूटर में पढ़ रही हूँ अभी, फोन भी मेरे साथ। आप कंप्यूटर में पढ़ रही हैं, नोट्स तो बना रही हैं, यस सर। और फोन नहीं है लेकिन घर पे? हाँ सर, मैं लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आइए आराम से, यूज कर रही हूँ, मेरे साथ नहीं है। आप कोई यूज कर रहा है फोन? यस। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, आप बताइए फिर सेकंड वाले केस में न्यूक्लियोफाइल क्या है, मरियम खातून, इन द सेकंड केस व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल? सर CN CN-, very good, and what is the leaving group? I-, very good. Third case में what is the nucleophile? NO2-, and leaving group is Cl-, and then here it is going to be CH3, O negative is the nucleophile and Br negative is the leaving group, ठीक है? Yes. Very good. Now all of you will write the next point.
टू थिंग्स, अच्छा यहाँ पे जैसे हमने लिखे हैं, अच्छा यहाँ पे पॉइंट और लिख लीजिए. You have seen that there are two different bases. One is incoming and the other is outgoing. लिखिए for feasibility of a reaction, for feasibility of a reaction, the incoming nucleophile, the incoming base, the incoming base that is nucleophile, the incoming base that is nucleophile should be stronger than the outgoing base that is leaving group. Now, as you have seen, two things are happening. Two things happen in SN, nucleophilic substitution. क्या है सबसे पहले? The cleavage of CX bond. Carbon halogen bond टूट रहा है ना? That is why you can see carbon halogen bond is breaking down. That is why the Br negative is here. So we will write first of all cleavage of CX bond. Second point, what is happening? Formation of carbon and nucleophile bond. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. बताइए. You can see that two things are happening. Cleavage of CX bond and formation of CNU bond. ना कुछ नहीं आता, जवाब क्या ही हो गया है बच्चों को. Yes, आयशा, मरियम, पारकर, रबा, tell me. Sir, हाँ बताइए. sir, what is the meaning of cleavage? Breaking of CX bond कीजिए. आप क्या लिख लीजिए? Breaking of CX bond. Done? Yes or no? Please tell me. Done, sir. Done, sir. आयशा की तो तबीयत खराब लग रहा है. Done, sir. आयशा घर में क्या बोलती हैं? उर्दू बोलती हैं आप या फिर मैथिली वगैरह कुछ बोल लेती हैं? जैसे सिवान तो मैथिली, सिवान में मैथिली नहीं चलता होगा ना आयशा? I am not from Sivan. आप सिवान से नहीं है, आप पटना से हैं? Yes. आप पटना से. माय बैड. पटना में चलता है मैथिली? No. नो. मैथिली पता है क्या होता है? नहीं. नहीं पता. मिथिला पता है? मिथिला? नहीं. कुछ नहीं पता है. क्या ही बिहारी हैं आप फिर. इधर देखिए आप. नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ एसएन. कितने क्या क्या चीज हो रही है बताइए. एसएन में क्या क्या हो रहा है बताएं सब कोई. ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड? Carbon hydrogen bond, कार्बन हाइड्रोजन. एंड फॉर्मेशन ऑफ carbon nucleophilic bond. कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड. कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल. Nucleophile. अब इसके नीचे आप कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ सुनिए. दो चीजें हो रही हैं तो दोनों चीज एक साथ हो सकता है या फिर अलग अलग स्टेप में हो. दो ही प्रोबेबिलिटी है. देयर आर ओनली टू प्रोबेबिलिटीज. व्हाट आर द टू प्रोबेबिलिटीज? SN can occur. Please don't write anything. Leave your pen aside. SN can occur in two probabilities. SN in one step हो सकता है. दूसरा क्या है? SN in two step. है ना? या तो क्या हो, दोनों ही की दोनों चीज. दैट मींस ब्रेकिंग भी हो रहा है, साथ में फॉर्मेशन भी हो रहा है. बोथ ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली. और पहले what can happen? Firstly, the CX bond will break, then it will stay like that, then the formation, then the nucleophile will come, and then it will attach to the carbon. Then it is going to be formation of two steps.
ठीक है, formation of CNU in one step or two step. There are only two possibilities. Now, if it is going to happen in one step, the reaction will look something like this. You have nucleophile plus you have Rx, that is the haloalkene. Please don't write anything. आप लिख रही है ना आयशा? आयशा आप लिख रही हैं? No, sir. हाँ, very good. ठीक है, लिखना नहीं है बिल्कुल. Yes. What do we have? We have nucleophile and we have halogen. Between these two, nucleophile and halogen, which is more electronegative? Have you heard this word, electronegative? पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? Yes, No. sir. पढ़ा. What is more electronegative, carbon or halogen? Halogen. पक्का? halogen? ठीक है. Yes. Yes, sir. जिन लोगों को अगर नहीं पता है वो इसको याद कर लेंगे. ऐसे पढ़ेगा. फोन कॉल बिहारी इश्क प्यार है. क्या है? फोन कॉल बिहारी इश्क प्यार है. Fluorine is maximum, then oxygen, then nitrogen, then chlorine, then bromine, then iodine, then sulfur, then carbon, then phosphorus, then hydrogen. इसमें these are almost equal. Then phosphorus and hydrogen are almost equal. But वो भी आपको याद रखने की जरूरत है. क्या याद रखिएगा? फोन कल बिहारी इश्क क्या है? इश्क प्यार है. याद रहेगा सबको? याद रहेगा? आयशा, मरियम, रबा. This is the order of electronegativity. Fluorine is the most electronegative, oxygen is next, then nitrogen, then chlorine, then bromine, then iodine, sulfur, carbon, phosphorus and hydrogen. Is this clear? Yes or no? Please tell me. याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बताइए. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा बाद में, अभी मत लिखिए. Now, which is more electronegative? Halogen atom is more electronegative. That is why it is going to pull the electrons from the carbon atom and it is going to get the negative charge. If the halogen atom is going to get the negative charge, then the carbon atom is going to get the positive charge. Clear है? Yes or no? Please tell me. Yes. ठीक. Now, nucleophile is already having a negative charge, so it is going to attack on the carbon atom like this, the R atom. And as soon as it is going to attack, what is going to happen? ये attack, this arrow, it tells you if it is going from one atom to the other atom, if it is going from one atom to the other atom, then it means there is a bond formation. And as soon as the carbon is going to form a bond, one bond is going to break because it cannot make 5 bonds. So this bond will break. एक ही step में दोनों हो रहा है. In one step, we are having attack of nucleophile and the breaking of CX bond. So you will get nucleophile here and it is attached with carbon atom like this. And what is happening? X negative is going to leave. Now, what is going to happen if you are having two steps? In the first step, what is going to happen? Cleavage of RX bond. That means cleavage of the breaking of the carbon and halogen bond like this. And it is going to give you, since carbon is losing electron because it is less electronegative. So while breaking of bond, halogen atom that is more electronegative, it is taking all the electrons and carbon is left with positive charge and halogen is left with negative charge. Carbon is left with positive charge. Halogen is left with, बोलिए भाई, halogen is left with Negative charge. Negative charge. ये बोलते क्यों नहीं? अब next, second. This R positive is there. In the next step, what is going to happen? Formation of CNU bond. So nucleophile will be here. It is going to attack on the carbon atom like this, and it is going to form the bond. Is these two things clear? Yes or no? SN in one step, SN in two step. Correct है? Yes or no? Please tell me. Yes. ठीक, अब देखिए, ध्यान सुनिएगा. SN in one step. SN in one step फिर से समझा दें. Yes, Rabba, what are you saying? Yes, sir. SN in one step again. Okay. So you understand the polarity here, delta positive, delta negative, why it is there? Rabba, keep your mic on. Once you have asked a question, please keep your mic on. Suggestion to everyone. You understand this delta positive and delta negative, Rabba? Yes, sir. Okay. And nucleophile has a negative charge? Yes, sir. Okay. But Then so why? Why? Nucleophile is a base. So nucleophile will always be electron. Nucleophile का negative charge क्यों होगा? क्योंकि nucleophile है ना, तो positive की तरफ जाता है. Positive की तरफ कौन जाएगा? जो negative हो. Nucleus में कौन सा charge होता है? Positive. और nucleophile is nucleus loving. तो nucleus loving के पास कैसा charge होगा? Negative charge होगा. Yes. ठीक है.
नेगेटिव चार्ज नहीं भी हो तो लोन पेयर होगा कम से कम। क्या होगा रबा? लोन पे। इलेक्ट्रॉन रिच होगा। न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू बी ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। सो एक्सट्रीम केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिचनेस इज नेगेटिव चार्ज। नाउ दैट इज व्हाई न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू, ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे अटैक करेगा। Yes. It is going to attack on positive. Now let us suppose you have carbon. It has some bonds like this, like this, like this, and then one bond is with halogen. Now, as soon as nucleophile is attacking, that means it is wanting to form a bond with carbon atom. ये attack का मतलब क्या हुआ? It is going to give the electron density to carbon atom. Now, carbon cannot make 5 bonds, correct, Rabba? Yes. That is why halogen has to leave. Separate halogen. Got it? Yes. sir. Understood? Yes. ठीक है. Now, please listen and tell me, guys. बताइएगा, आंसर दीजिएगा. Please don't write anything. Please tell me the answer. If I am going to increase the amount of nucleophile, what I am going to do? Tell me. I am going to increase the amount of nucleophile. Then more and more nucleophile will be present, और वो सारे के सारे किससे लड़ते रहेंगे? They will be getting in contact with the substrate haloalkene. दोनों के अंदर if I am going to increase the amount of nucleophile, then what is going to happen? ज्यादा से ज्यादा nucleophile किससे टकराएंगे? haloalkene से टकराएंगे. And if there is more collision, ज्यादा अगर टकराव होगा, there is more collision, then the reaction will be faster. Correct? Yes or no? Please tell me, guys. If I am going to, अरे दो चीजें हैं, दोनों आपस में टकराएंगी तभी तो रिएक्शन होगा, है ना? If they are going to collide, that means they should come into contact with each other. How can they come into contact with each other? एक बॉक्स लीजिए आप, इसके अंदर if you are having 2 nucleophile and 2 haloalkene, then what is the probability of collision? ये ध्यान में रखिए क्या होगा, ठीक है? You have taken another box, same volume. Here I have 1000 Rx and 1000 nucleophile. What do you think? Where will be the reaction faster? कहाँ पे collision ज्यादा होगा, कहाँ पे प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगा? फर्स्ट केस, सेकंड केस, ए केस, बी केस? बताइए. बी केस. बी, राइट? ए केस में मरियम कैसे? मरियम, हाउ ए केस? ए केस में तो दो ही है ना, तो टकरा, मतलब वो पता नहीं कब टकराए. मरियम टेल मी. सर मी. हाँ, आपने कहा ना ए सर केस. ऐसे बी केस. आपने बी केस, No, तो sir, खातून I ने said कहा. B case. अच्छा ठीक है, पार करने का ए केस. मरियम खातून, आपने क्या कहा? किसी ने ए केस कहा था. सॉरी सर मैंने नहीं कहा था. आपने नहीं कहा था. किसने कहा था ए केस? किसी ने नहीं कहा. ठीक. रबा ने कहा था No, sir. I said B case. बी केस ना. ठीक है, सबको बी केस लग रहा है ना? अरे हम सही गलत की बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए. ऐसे नहीं कि याद करने के लिए हम कोई चीज करें. आप सबको ये महसूस हो रहा है, ऑल ऑफ यू फील ना कि द बी केस इज गोइंग टू हैव अ हायर स्पीड ऑफ रिएक्शन. यस और नो? यस सर. Yes. That means I can say that rate of reaction is going to depend on two things. I can increase the rate of reaction by increasing the amount of concentration of nucleophile, and I can also increase the rate of reaction by increasing the concentration of haloalkene. Is this clear? Yes or no? Please tell me. So there are two molecules which are determining the rate of reaction, and that is why we say that this is type of reaction is bimolecular. What is this? Bimolecular. और यही से नाम आया है किसका? SN2 का, nucleophilic substitution. And this two words is telling me about the bimolecularity. That means there are two molecules which are going to determine the rate of reaction. ये समझ में आया मरियम खातून and Maryam Parker, Prabha and Aisha? All of you got this? यस. Similar. अब ये बताइए, here we are having two step. Here we are having two step. अब एक एग्जांपल आपसे हम पूछते हैं, होप आप लोग जवाब दे पाए, है ना? ऐसे तो वहां पे कपड़ा सुखाना पड़ता है या फिर ड्रायर में सूख जाता है? कपड़ा वपड़ा अगर धोते हैं घर में तो ड्रायर में सूख जाता है या फिर सुखाना पड़ता है ऐसे तार वार लगा के, या फिर वो स्टैंड लेके? अरे बताइए भाई, सऊदी की बातें थोड़ा हमें बताइए, क्या होता है? सर सुखाना पड़ता है. सुखाना पड़ता है. ठीक है, तो कुछ कपड़े हैं सुखाने के लिए. क्या क्या कपड़े? यू हैव अ जीन्स, ठीक है, you have a shirt and you have a t-shirt.
हाँ, सऊदीया की गर्मी है, और मदीना में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, इफ आई एम राइट। मक्का सर, मक्का मक्का मदीना। में ज्यादा, दोनों में ही। अच्छा, तो लेट अस सपोज वहां की गर्मी है बिल्कुल, जीन्स सूख जाता है लेट अस सपोज 20 मिनट में। ठीक है, अरे ऐसे मत बोलिएगा सर 20 मिनट में नहीं सूखेगा, मान लीजिए सूख जाता है 20 मिनट, ठीक है। शर्ट सूखता है 10 मिनट में, और टी शर्ट सूखता है 5 मिनट में, चलिए ठीक है। एक काम कीजिए, जीन्स को 15 कर लीजिए, अच्छा सा नंबर हो जाएगा, ठीक है? 15, 10 और 15 मिनट में जीन्स सूखता है। शर्ट कितने मिनट में सूखता है? शर्ट कितने मिनट में सूखता है? अरे बोलो, 10 मिनट। और टी शर्ट 5। 5 मिनट। तो तीनों को सुखाने के लिए कितना टाइम लगेगा? चैट में बताइए, आंसर दीजिए। चैट में, चैट में, चैट चैट में, चैट में, चैट चैट में दीजिए जरा आंसर। जूम चैट, व्हाट्सएप मत करने लगेगा, जूम चैट में ही दे दीजिए। सेंड दी आंसर्स टू सालिम, सेंड दी आंसर्स टू सालिम। ठीक, अरे बहुत बढ़िया, पार्कर ने बहुत क्या जवाब दिया। अरे बात ठीक है। टोटल टाइम कितना लगेगा तीनों को सुखाने के लिए? हाँ हाँ ठीक है मरियम, ठीक है, ओके, समझ गए थे हम। बाकी पार्कर ने आंसर दे दिया, मरियम ने आंसर नहीं दिया है। आयशा, ओके आयशा, वेरी गुड। और मरियम खातून, मरियम खातून यहाँ तो आंसर कर दीजिए। चैट में ही बोला हमें, तीनों को सुखाने में कितना टाइम लगेगा, इतना आसान सवाल है। 30 मिनट, है ना? ये लोगों ने कभी कुछ काम नहीं किया, 30 मिनट वालों ने ना कभी कुछ काम नहीं किया है। ये वो लोग हैं जो पानी खौला के वहीं पे खड़े रहते हैं, क्या कर रहे हो भाई, पानी खौल रहा है। हाँ, अरे भाई, जब जीन्स 15 मिनट में सूख जाएगा तब तक तो टी शर्ट और शर्ट सूख चुका होगा ना। बोथ ऑफ देम विल हैव बीन ऑलरेडी ड्राइड आउट। यस और नो? हम्म। मरियम पार्कर एंड मरियम खातून, मरियम पार्कर एंड मरियम खातून, कितना मिनट लगेगा? 15 minutes. 15 मिनट्स लगेंगे ओनली, राइट? बिकॉज इन 15, लाइक फर्स्ट 5 मिनट्स में तो टी शर्ट सूख गया। फिर ऐसा नहीं है ना कि आपका वहां पे जीन्स इंतजार कर रहा है कि शर्ट सूख जाए उसके बाद हम सूखेंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं है, राइट? जीन्स ऐसा तो है ना, जीन्स भी सूख रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ड्राई ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स? 15 मिनट्स। दैट मींस द रेट, द स्पीड ऑफ ड्राइंग डिपेंड्स ऑन द स्लोवेस्ट स्टेप, करेक्ट? ये सबसे धीमा सूख रहा है ना, और उसी पे क्या डिटरमाइन करेंगे, स्पीड भी उसी पे डिपेंड कर रहा है, तीनों चीजों की। अगर तीन चीजें हैं आपके पास, दैट मींस इफ यू हैव थ्री थिंग्स, इफ यू हैव थ्री थिंग्स, देन द स्पीड ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग टू डिपेंड ऑन द स्लोवेस्ट वन। क्लियर है सबको? यस और नो, प्लीज टेल मी। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया Yes. करें। हाँ, अब बताइए, जब आपके पास दो स्टेप्स हैं, इफ यू हैव टू स्टेप्स, देन हियर आल्सो द रेट विल डिपेंड ऑन द स्लोवेस्ट स्टेप। रेट विल डिपेंड ऑन, रेट विल डिपेंड ऑन व्हाट, द स्लोवेस्ट स्टेप। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़िएगा, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज इक्वल टू स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप। नाउ टेल मी व्हिच इज द स्लोवेस्ट स्टेप, फर्स्ट वन और सेकंड वन? कौन सा स्लो होगा? First one. फर्स्ट वन स्लो होगा मरियम पार्कर, क्यों होगा फर्स्ट वन स्लो? जी, फर्स्ट वन स्लो, अच्छा देखिए, आपने पढ़ा है पार्कर, जी आपने पढ़ा हुआ है ये चीज कि पहला मतलब फर्स्ट स्टेप इज स्लो इन, हाँ, स्कूल में? नहीं, no sir. यस सर बोला, नो सर बोला, आपने क्या बोला? No sir. नो। कैसे बताया आपने फर्स्ट स्टेप इज स्लोअर? Because it is no sir. Second step is slower because अरे it is बिकॉज इट इज, हाँ ठीक ठीक बोलिए, बिकॉज इट इज, it the rate. रेट, हमने तो ऐसे लिखा ना सिर्फ आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल बी द स्लोवेस्ट स्टेप, हमने नहीं बताया अभी कौन सा स्टेप स्लोवेस्ट, हम पूछ रहे हैं। एनीवन हैज एनी अदर आइडिया? टेल मी आयशा, व्हाट डू यू थिंक व्हिच विल बी स्लोअर, फर्स्ट और सेकंड? First one. फर्स्ट वन, व्हाई फर्स्ट वन?
Because nucleophile and halogen both are breaking and making a bond at the same time. नहीं 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 नहीं, वो नहीं पूछ रहे हम। अब यहाँ पे ये तो हो गया खत्म इसी कहानी। SN1 SN2 जो था वो तो हमने बता दिया। अब हम यहाँ पे when SN is in 2 step, तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप में कौन स्लो है? बिटवीन वी हैड जीन्स टी शर्ट ना, तो उसमें जो स्लोएस्ट था वही डिटरमाइन कर रहा था स्पीड। हियर आल्सो द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द वन ऑफ दीस 2 स्टेप्स। व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज स्लोएस्ट? आप लोग को आंसर जानते पता है, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आपका आंसर ऐसे निकलेगा क्या ही। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? चीजें टूट रही हैं या चीजें बन रही हैं? व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट स्टेप? Both are happening together. ब्रेकिंग ना, ब्रेकिंग। सेकंड स्टेप में Formation. फॉर्मेशन। ठीक है। Also see, in the first step you are having neutral molecules, stable से किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया तो अनस्टेबल, राइट? From neutral you are going to charge, that means from stable to unstable. In the second step you are having positive and negative charge, so you can imagine they will be already coming together, है ना? उसके लिए आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। If you have to break a bond, you have to put some energy, but when you have positive and negative charges, they will automatically coming closer. So now tell me, क्या ख्याल है? Which will be slow और कौन सा फास्ट होगा? Yes, आयशा tell me. नाम लेने पे बोलती हैं ये लोग ना। आयशा बताएं कौन सा स्लो होगा? सेकंड विल बी स्लो। क्यों? वाई सेकंड? ओके, पार्कर आप बताएं which one will be slow? नहीं आया समझ में? आप लोग तो जवाब तो देती नहीं है इतना ना कि हम क्या ही बताएं। ठीक है, फिर ऐसा रहेगा आपको तो हम सिर्फ सवाल करना छोड़ देंगे। What I will be doing, I will be, फिर हम सिर्फ बताने लगेंगे यहाँ पे ये हो, यहाँ पे ये हो। ठीक है, ध्यान सुनिए सवाल। What is happening? आप ये तो बताइए ना, बॉन्ड ब्रेक करने में आपको एनर्जी ज्यादा लगती है, बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी ज्यादा लगती है? ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी ना, तो ब्रेक करना मुश्किल ना, ब्रेक करना मुश्किल। और सेकंड स्टेप में तो पॉजिटिव नेगेटिव में तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगे ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को सामने लाने की जरूरत या खुद ब खुद आ जाएंगे? दे विल बी स्पॉन्टेनियसली कमिंग टुगेदर, राइट और नॉट? टेल मी। एक तो ऑल ऑफ यू प्लीज कीप योर माइक्स ऑन। हमको नाम लेने ये बिल्कुल हमको, हाँ, कीप योर माइक ऑन। जिसको समझना है, जिसको पढ़ना है वो माइक ऑन करके रहे, ठीक है ना? In the second step, positive and negative charges will already coming together. No? They will be coming closer together. Correct? है ना? Yes, sir. And in the first step, you have to put in some energy. The first step is the hard step. वही तो slow होगा, नहीं होगा slow? बताइए। Yes. आया नहीं आया? समझ में आया? याद करने की चीज है, बताइए। समझ में आई बात? ये याद करना है आपको? Yes, sir. क्या यस सर? सिर्फ मरियम पार्कर सिर्फ यस सर बोल। हम पूछ रहे हैं याद करना पड़ेगा, ये समझ में आया? समझ में आ गया सर। समझ में आया? Yes. ठीक है। So RDS is what? First step. That is why the rate will depend on. Now in the RDS, you tell me what is the reactant? You have only one reactant, that is haloalkene. So that is why the rate is going to depend on only one molecule, that is the haloalkene. That is why we will call this one molecule is determining. So we will call this unimolecular. And unimolecular से क्या आया है? SN1. So now you may have heard this SN1 and SN2 in your school. You now know that there are two possibilities of SN in one step or SN in two step. If we have SN in one step, then the rate depends on two molecules. That's why SN2. And when we have SN in two step, then the rate depends only on one molecule, and that is why we have SN1. So this 1 and 2, it tells you about the molecularity. That means the number of molecules on which the rate is depending on. Okay, it is not telling you about the number of steps. Now you will write next types of SN. इसको नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखिए आप। Now types of SN, two types, SN1
So we have to write this. You have to write this SN2. अब तो समझा दिया हमने ना मेनली तो क्या हो रहा है. Now you will keep writing. If something seems new, then you will let me know. Otherwise, nothing should seem new. ठीक है. SN1, please write. It refers to unimolecular nucleophilic substitution. Unimolecular nucleophilic substitution. That is the next point. The reaction in which rate depends on concentration of substrate, and in this case it will be haloalkene. In this chapter it will be haloalkene, is known as SN1. Here we have seen a few things. We have already know what is the rate law. R is equal to, we have seen it is proportional to Rx. So we will remove the proportionality sign, put up proportionality constant K into Rx. And or you can also write R is directly proportional to the concentration of haloalkene. Next, order of reaction. Now, since it depends only on one molecule, it will be equal to 1. We can also write or molecularity. It only depends on one molecule, that is why molecularity is also equal to 1. After this, you will see the mechanism, which we have already seen. So you will just write it with me, mechanism. Please let me know if you find something new. It occurs in 2 steps. It occurs in how many steps? 2 steps. The first step is breaking of carbon-halogen bond. And after this, and let's see, I have a carbon atom. It is attached with, let us suppose, X, Y, and Z. Something is attached, X, Y, and Z. Okay. Then it is also attached with a halogen atom. Oh, halogen atom तो X हो जाएगा ना, एक second. Please don't write X, Y, Z. Write PQR. PQR लिखें. PQR के अलावा कुछ और लिख सकते हैं. A, B, C भी नहीं लिख सकते. D, E, F. It is attached with, ऐसे लिख लीजिए, P, Q, and R. ठीक है, some P group, some Q group, and some R group. And then there is halogen atom. Now, the first step is very slow, and it is also almost reversible. And as you have seen, because what is happening? Here the bond is breaking. You have to put in energy and all of things slow. And what you are getting, some P group is attached to carbon atom, some Q group is attached to the carbon atoms, and some R group is attached to the carbon atom. Now, this bond is breaking, so carbon is going to have a positive charge because initially it had 4 bonds. That means it already had 8 electrons shared pair. Now, one bond is breaking, that is why it will get a positive charge, plus you will have the X negative. Now, this is a carbocation. Carbon with a positive charge, carbocation. Cation means positive charge. Now, this step, breaking of CX bond, can also be called formation of carbocation. Formation of carbocation. Now, in the second step, you will write, please see. Now,
the structure of carbocation is going to be something like this. You have carbon atom and it is going to be having 3 bonds. That is why it will be trigonal planar in structure like this. So P group will be here, the Q group will be here, and the R group will be here. Now there will be a p orbital, vacant p orbital like this. ये positive charge है ना? Here it is having only 3 bonds. That is why there will be a vacant p orbital. Now ये बताइए ये कितने लोगों को समझ में आया? Second part में जो हमने vacant p orbital बोला. How many of you understood this? मरियम? नहीं. Vacant p orbital किसी को आया? नहीं आया. Parker, you understood this or not understood this? Yes, sir. Understood. देखिए बाकी यहाँ पे देखें कितना बंद करेंगे, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, सऊदीया में गुपचुप मिलता है? गुपचुप, पुचका, क्या कहते हैं, पानी पूरी? Yes, sir. मिलता है? कहाँ मिलता है? मॉल में? बहुत जगह मिलता है सर। बहुत जगह मिलता है? नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। ऐसे भी ना, मतलब हमारे अगर आप बिहार वगैरह में या फिर इधर इंडिया में कैसे आता है, मोहल्ले में अगर आता हो, अगर आप लोग शहर में रहते तो आपको जाना पड़ता हो, गांव में मोहल्ले में ही आ जाता है, तो ऐसे टन 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 कर जाता है। किसी के यहाँ आता है इस तरह से? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं। नहीं, आप लोग को जाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6, सही है। इट विल बी 1s2 2s2 2p 2p 2, वेरी ठीक है। This is the outermost shell. In the outermost shell, what do we have? 2s and 2p. Valence electrons. हाँ, valence shell के valence electron. 1 electron, 2 electron, 1 electron and 1 electron. This is the ground state. फिर एक आएगा excited state. If you remember the 11th standard, कुछ नहीं याद। Excited state में क्या होगा? This 1 electron will be getting 1 electron. 1 electron, यहाँ पे 1 electron, यहाँ पे सबका, ठीक है। अब यहाँ पे it has how many bonds? 3 bonds. तो क्या होगा बताइए? 3 bonds है ना, और एक क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज है। If the carbon is having positive charge, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, right? Can I write it like this now? If you have carbon पे positive charge, carbon पे positive charge है ना, then it is going to have 1 electron, so 2p 1 हो जाएगा। Yes. Now these 3 are going to hybridize. क्या हो जाएगा? S and 2 of the p orbitals. So this will be sp2 hybridization. That is why it is having trigonal planar structure. ठीक है यहाँ तक? Yes. ट्रेन के साथ साथ है या ट्रेन छूट गई? ट्रेन के साथ साथ है? Yes sir. ठीक है। And here 1 electron, 2 electron and 3 electron. Now this vacant p orbital खाली का है, vacant p, pure p, वही यहाँ पे। This is the vacant pure p orbital. आया समझ में सबको? Okay sir. पार्कर आपको आया नहीं आया? Yes, sir. समझ आ गया. ये sp2 हो गया और ये vacant p था, और वही vacant p को हमने यहाँ पे लिखा। Now this all of you know ना, p is what? Dumbbell structure. ये तो पता होगा सबको। All of you know the structure of p orbital is like this. Dumbbell. इस तरह से होता है ना, डम्बल। ठीक है, चलिए। Now our nucleophile is coming like this. Now nucleophile has 2 possibilities of attack. It can either attack from this side or it can attack from this side. Correct? या तो ऊपर से अटैक करेगा या तो नीचे से अटैक करेगा। Now what is the change that is going to happen? The change that is going to happen is that if it is going to attack from the upside, then please see, if it is going to attack on the upside, तो मान लीजिए अपसाइड ही आपका क्या था? हाइड्रोजन वाला साइड था, Q और R इधर और इधर थे ना, P Q R। ठीक है, तो one of the configuration is going to be something like this. You have P, then you will have the carbon atom like this, Q, and you will have the R. Nucleophile will attach here. Another case, if you have the green attack, then you will have carbon,
The nucleophile will be here, Q will be here, P will be here, and R will be here. ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा, व्हाइट वाले का उल्टा हो जाएगा. Please write this down. Now please see, look at the white structure of the reactant. ये वाला. Okay, look at this one. It is similar. इसको हम blue कर देते हैं. And look at the product here. The blue reactant is similar to white or green. क्या ख्याल है? Look at this P, Q, R. Tell me. The blue one, it is similar to white one or the green one? White. White. So we will say that the configuration, the attachment of P, Q, and R is retained, and this is known as retention. Okay. And what is happening in the green one? It is completely inverted. Can you see that? Yes or no? Yes, sir. So it is, this type is known as inversion. Inversion. Okay. If the product is having the same type of configuration as that of reactant, then we call that retention. If it has inverted or completely opposite configuration, attachment of the groups, then we call it inversion. Okay. And these two, in SN1, what happens? You get retention product also, inversion product also. Both of them are approximately 50% retention होता है, यानी कि 50% time nucleophile is going to attack from the top, और बाकी 50% कार्बोकैटायन पे nucleophile नीचे से, probability up and down 50-50. Inversion is also 50%, and both of these are mixed together inside a solution, and that solution is known as racemic mixture. Racemic mixture, and the process is known as racemization. आप इसको लिख लीजिए जरा. All of you are done with the mechanism. Yes or no, please tell me. Mechanism हो गया? Yes. नहीं हो गया? Sir, यहाँ पे हाँ जी बताएं. sir, can you explain retention and inversion once again? What did Parker said? Can someone repeat? Yes, he's Can you asking explain Retention and inversion. again? Yes, sir. Again. हाँ ठीक. First of all, आप ये बताइए, you understood the formation of white and the green product, या product कैसे बना वही समझ में नहीं आया? You understood the formation of the white product and the green product, yes or no, Parker? White product, Rama. yes, sir. Green product नहीं आया. Yes. देखिए फिर से कोई दिक्कत नहीं. कार्बन है, ओके. P, Q, R. Here we have halogen atom. पहले स्टेप में क्या होगा? This is going to break कार्बन एटम. P इधर, Q और R इधर इधर. ठीक है. P ऊपर, Q इधर, R इधर. Okay. Now comes the nucleophile. ठीक है. Now comes what? Nucleophile. Nucleophile can attack from here, or it can attack from here. Okay. किसने पूछा था? रबा ने पूछा था या मरियम ने पूछा था सवाल? रबा आपने पूछा था या मरियम ने? मरियम ने. आपने पूछा था. ठीक है. आपको भी, आप पार्कर आपने भी पूछा था, आपको भी डाउट Yes, था. sir. ठीक है. तो एक प्रोडक्ट आप बताइएगा, एक प्रोडक्ट रबा बताएंगे. ठीक है. ओके. यस और नो, प्लीज टेल मी. नाउ Yes, sir. if it is going to, if we are talking about the white one, तो व्हाइट वाला प्रोडक्ट लिखेंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल. इस साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक, इट विल बी अटैच्ड टू कार्बन एटम. सही है. मरियम Yes, एंड sir. रबा, एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. sir.
Now, if it is going to attach on this part, then P को Q को R को थोड़ा सा वो push कर देगा, and they will look something like this. Tell me. Any problem? No, sir. No. Green वाले में देखिए, green वाले में what is going to happen? In the green product, we have the carbon atom. Now tell me, nucleophile right side में या left side? Right. Nucleophile will be at right side. तो बाकी चीजें इधर Left. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ना. व्हाइट वाले में क्या हो रहा है? सेम Inversion. कॉन्फ़िगरेशन है, इन्वर्जन. वेरी गुड. और ग्रीन वाले में Retention. आ गया. पार्कर को आया? Yes, पार्कर यू sir. गॉट दिस? आ गया. ठीक. मैकेनिज्म आपने लिख लिया तो नहीं लिखा तो इसको भी लिख सकते हैं आप लोग. दिस इज द फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप हो जाएगा. ठीक है, चलिए. मैकेनिज्म लिख लिया आप लोगों ने ना, तो यहाँ पे लिखिएगा SN1. देखिए SN1 क्या लिखा है? हाँ, SN1 occurs. Just a second. Just a second, guys. थोड़ा रुकिए गाइस. Sorry. हाँ. SN1 occurs via intermediate carbocation. Now, since nucleophile attacks on vacant p orbital of C positive. C positive का मतलब कार्बोकेटायन ना, कार्बोकेटायन को C positive से डिनोट करेंगे. Of कार्बोकेटायन, it attacks 50% of time from one direction, up, down, left, right, जो भी one direction, and 50% of the time from another. From another. This gives 50% inverted product, inverted, and 50% retention product. And the mixture of 50% I inverted and 50% R is called racemic mixture. And the process is called racemization. समझाने वाली कोई बात? ये सारी पुरानी बात, सारी पुरानी बात है जो लिखा है यहाँ पे. 3 पॉइंट. अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दीजिए. मरियम, पार्कर, जी. पुरानी बात है ना सारी? Yes, sir. जी. सारी पुरानी बात. ठीक.
अब लिखिए SN2. Right here it refers to bimolecular nucleophilic substitution. Right, next, the reaction in which rate depends on both the substrate, that means the haloalkene Rx, and the nucleophile is called SN2. Rate law meaning R is equal to K into the concentration of Rx as well as the concentration of nucleophile, दोनों चीजों, और rate is directly proportional to the concentration of Rx and the nucleophile. Order 2. Molecularity. Now we will look at the mechanism. एक सेकंड रुकिएगा जरा, mechanism को इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं रेड से, ठीक है. Please see. First of all, you will write what happens. इसमें दोनों चीज एक साथ होती है. SN2 में yes or no? Both. Cleavage of CX bond and formation of CNU takes place simultaneously. First point. Cleavage of CX bond and formation of CNU bond takes place simultaneously. What will be the mechanism? Please see. You will be having a carbon atom like this, and you will be having the 3 groups like this. अब इसमें से these 2 are in the same plane, आप इसको ऐसे मान लीजिए, and this is behind the plane, इसको मान लीजिए, और ये यहाँ पे आपके पास X, P, Q, and R. Okay, here we have the X. This is delta negative, this is delta positive, and here you have the nucleophile. एक बात बताइए, there are few ways to attack the nucleophile. ठीक है, there are few ways for the nucleophile to attack. Nucleophile क्या कर सकता है? Nucleophile ऐसे आए, बोले कि हाइड्रोजन को हटाना है, तो हम हाइड्रोजन से आके लड़ेंगे. प्लीज डोंट राइट एनीथिंग एंड सी हियर. इट कैन कम एंड अटैक लाइक दिस टुवर्ड्स द हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन को आके हम लात मारेंगे, हाइड्रोजन भाग जाएगा. ये हो सकती है. दिस कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया, दिस कैन बी वन ऑफ द टैक्टिक, वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ न्यूक्लियोफाइल. यस और नो, प्लीज टेल मी. करेक्ट है? यस और नो? बट एक प्रॉब्लम आ जाएगी. प्रॉब्लम विल बी, व्हाट इज द चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम? व्हाट इज द चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम? Negative charge. What is the charge on nucleophile? Negative charge. So attraction या repulsion? Repulsion. Repulsion भाई. बेसिक्स को नहीं हिलाएंगे हम, बेसिक्स से ही चलेंगे. ठीक है, सही आंसर दे. आप प्लीज समझिए, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा बताइए? रिपल्शन होगा. पार्कर? Yes, sir. हाँ, है ना. ऐसे ऐसे अटक गया था कोई. कौन अटका था? आप ही अटकी थी. Yes, sir. अटकना नहीं है ना. नेगेटिव नेगेटिव तो फिर न्यूक्लियर, अरे रिपल हो जा रहा है. होगा ही नहीं. रिएक्शन होगा ही नहीं. दैट इज अ रिएक्शन, दैट इज व्हाई न्यूक्लियोफाइल हैज टू कम फ्रॉम द बैक साइड, ताकि ये किसको अटैक करे?
कार्बन को बोले अरे भाई हमको बॉन्ड बनाना है तुम्हारे साथ, एक्स को भगाओ, हाइड्रोजन को भगाओ, बॉन्ड बनाना, हाइड्रोजन को भगाओ, हाइड्रोजन को भगाओ। ऐसे है पीछे से, ठीक है, फ्रॉम दी बैक साइड। अंडरस्टूड? यस और नो प्लीज टेल मी। अरे हाँ ना, कुछ तो बोले। Yes, sir. Yes, sir. So this will be the attack. ठीक है। Now what is happening? Both the things are happening the same. So कार्बन इधर आ गया, P Q इधर आ जाएगी, R नीचे आ जाएगा, P यहाँ पे, Q यहाँ पे, R यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल आराम से इसको धक्का दे रहा है, बोल रहा है कि भाई बॉन्ड बना ले, बॉन्ड बना ले भाई, बॉन्ड बना ले। और इधर इसको हम डिनोट करते हैं ब्लू से, है ना, ब्लू अच्छा कलर है शायद, इसको हम डिनोट करते हैं इससे ब्लू से। और यहाँ पे ये रेड डिनोट करेगा कि हाइड्रोजन बोल रहा है, कार्बन बोल रहा है हाइड्रोजन को भाई न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना जा रहा है भाई, चला जा। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग। गॉट इट? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, इसको sir. डब्बा मत बनाइएगा, डब्बा मत बनाइएगा, अभी रुक जाइए, इसके साथ अभी हम खेला करेंगे एक। I want to make square brackets, लेकिन हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं इतना बड़ा तो लाइन ही टेढ़ा हो जाता है, तो इसका हमने एक इलाज निकाला। बन गया स्क्वायर ब्रैकेट? चलिए आगे देखिए। नाउ न्यूक्लियोफाइल पीछे से बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बताइए न्यूक्लियोफाइल राइट साइड या लेफ्ट साइड? Right side. Sorry, left side. राइट, लेफ्ट साइड। Yes. तो बाकी की चीजें ऐसे P Q एंड R, बताइए रिटेंशन या इन्वर्जन? Inversion. इन्वर्जन, इन्वर्जन है 100% इन्वर्जन, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल को एक ही जगह है, पीछे से ही आके अटैक कर सकता है, आगे से तो कर ही नहीं सकता, बिकॉज हाइड्रोजन है। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन देन देयर विल बी रिपल्शन, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नेगेटिवली चार्ज। 100% इन्वर्जन। So you'll write 2 points. SN2 occurs via, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। हैरी पॉटर देखा आप लोगों ने? Yes, आप sir. लोगों ने हैरी नहीं देखा? किस किस ने देखा है, हाथ उठाएं। No, sir. नो, पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है वो देखा हो, सिर्फ पार्कर ने देखा है, बाकी किसी ने ना पढ़ा है ना देखा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक। पार्कर उसमें एक कैरेक्टर है जो कि शायद मतलब वो लोमड़ी बन जाता है ना, ऐसा कोई कैरेक्टर जो भेड़िया या लोमड़ी बन Yes, जाता sir. है ना? Yes, sir. तो वो फेस देखा आपने जब वो ट्रांजिशन करता है? इंसान रहता है, क्या रहता है वो? हमने देखा नहीं, बस वो हम मतलब केमिस्ट्री के नहीं आई, एक बार हम देख रहे थे किसी का, हमने अरे ये तो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे। बताइए क्या रहता है? आदमी रहता है भेड़िया बन जाता है, ऐसा ही होता है? जी, आदमी से हाँ, भेड़िया। आदमी से भेड़िया बन जाता है। तो यहाँ पे भी वो ट्रांजिशन जब कर रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पेन में होता है ना? पेन में होता है जब ट्रांजिशन कर रहा होता है, रात का वक्त रहता है, आसपास में हैरी पॉटर वगैरह भी रहते हैं शायद, ऐसा कुछ सीन है नहीं है? Yes, sir. तो ट्रांजिशन स्टेट वही है, दोनों चीजें हो रही है ना, एक बीच में वो लोमड़ी भी है भेड़िया भी है, तो वही ट्रांजिशन स्टेट है ना, इन विच द न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो अटैच्ड एंड द हाइड्रोजन इज आल्सो अटैच्ड, लेकिन दोनों ही पार्शियली अटैच्ड है। ठीक है, सो SN2 अकर्स वाया ट्रांजिशन स्टेट और SN1 अकर्स वाया कार्बोकेटायन ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, SN2 gives 100% inverted product. Process is called inversion. आ गया सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। All of you understood this? Yes or no, please? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Can I move on? आगे 1 बढ़े? second, sir. 1 second लिख लीजिए आराम से।
नाउ कैन यू राइट एटलीस्ट 3 या 4 पॉइंट का डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2? अगर आपसे कहा जाए राइट डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2, लिख लेंगे ना? एक तो Yes, sir. रिएक्शन के हिसाब से, बायोमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, रेट क्या होता है उसमें, रेट क्या होता है, और एक प्रोडक्ट के हिसाब से, और एक इंटरमीडिएट के हिसाब से, है ना? सारी चीजों के हिसाब से आप लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट के हिसाब से वहां पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। प्रोडक्ट के हिसाब से वहां पे रेसमिक मिक्सचर, यहाँ पे 100% इन्वर्जन, है ना? वहां पे रिटेंशन इन्वर्जन दोनों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड। ओके, अच्छा, वहां पे अटैक, यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक होता है। व्हाट टाइप ऑफ अटैक इज हियर? बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चलिए, प्लीज राइट नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2. Number 1, nature of substrate. What is substrate here? It is haloalkene. Second, nature of leaving group. Third, nature of solvent. इससे सवाल बहुत बार आया है, इससे सवाल कभी कभी आया है, इससे सवाल उतना आता नहीं, ठीक है? बट ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। बड़ा मन किया किसी को CBSE को टफ पेपर बनाने का, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट से सवाल पूछ लेगा। बल्कि आसान है, ऐसा नहीं कि हार्ड है, आसान ही है, लेकिन सवाल पूछ सकता है, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। आप लोग यहाँ पे जरा, अगर हो सके तो कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ के आ जाइएगा जरा। इतना कर सकते हैं? कार्बोकेटाइन एंड स्टेबिलिटी, क्लास 11th में था ना कार्बोकेटाइन, ये सुनो, पार्कर, आयशा, मरियम एंड रबा, Yes. ठीक Yes, है? sir. थोड़ा सा रीडिंग करके आ सकते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर, Yes, sir. ठीक है? अगर आपको कुछ नहीं मिले तो फिर हमको प्लीज मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको तो कुछ नहीं मिला, आप हमें पुराना, मतलब मेरे पास 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स होंगे, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ऑल ऑफ यू रोट दीज 3 पॉइंट्स? Yes, sir. लेट मी सी, 11th में हमने तो कराया तो था, एक बार देख लेंगे, डेट अगर मिल जाए हमको तो हम आपको लेक्चर भेज देंगे। 11 आइसोमेरिज्म, स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ ये है, आई थिंक स्पीड टू हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन की एटम प्लस M माइनस M हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे है कार्बोकेटाइन तो, लेकिन और देख लेते हैं, अलग से भी बताया, हाँ ये बताया हुआ। Stability of intermediate carbocation, electrodensic group stabilizes, electron withdrawing group destabilizes, charge delocalization stabilizes, resonance and hyperconjugation stabilizes. Stability is directly proportional to resonating structure and number of alpha hydrogen. यहाँ पे ये आपके पास कुछ सवाल भी है, ये हाँ चलिए ठीक है, ये 15 दिसंबर का, अगर हो सके तो आपको मांगना हो तो मांग लीजिए, का लेक्चर है मौजूद, है ना? लेकिन बेहतर होगा कि आप NCERT थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर में ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं कि ना एक लेक्चर ही है, अगर किसी ने कंप्लीट चैप्टर देखा तो उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक लेक्चर से ऐसा नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंप्लीटली कनेक्टेड यहाँ वहां से, है ना? पहले आप ट्राई कीजिए बुक से पढ़ने का, उसमें नहीं कुछ आया तो फिर हमें बताइए, और उस पर भी कुछ नहीं आया, पढ़ के भी कुछ नहीं आया तो फिर तो हम नहीं, है ना? एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं आपको जब तक समझ में ना आ जाए, है ना? समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, डन एवरीवन, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट वंस अगेन ऑन मंडे ना, अब तो हाँ मंडे। चलिए, बाय बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर। Sir, I have a doubt. आपके पास डाउट है? डाउट बताइए, क्या डाउट है? Sir, in yesterday, day before yesterday's class, IPSC nomenclature. Can you No. explain again?
आप क्या एक्सप्लेन करना है? हाउ विल डिफाइन लाइक डिफरेंशिएट कैसे करेंगे पेरेंट और सब्स्टिट्यूशन, फंक्शनल पेरेंट का ग्रुप, सब सैचुरेशन, वो समझ आ गया। उसके बाद जब पेरेंट और सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो वाला। पेरेंट जो होगा इट शुड इंक्लूड, पेरेंट पहले सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है ना बाप? ओके सर। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ दीजिए। पेरेंट शुड इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर ये तीनों नहीं है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए। ठीक है, पेरेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा अब, हाँ या ना बताएं। यस सर। ठीक है, आपने देख वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी जो प्लेलिस्ट भेजा था हमने? सर आपने कोई प्लेलिस्ट नहीं भेजी, आपने अरे एक क्या पीडीएफ बात, भेजी। अरे पीडीएफ तो भेजी देखिए आप, हाँ ठीक है ठीक है, देखिए आप, देखिए फोन देखिए आप, हमको तो लग रहा है हमने भेजा है। अरे बाप, देखिए सर आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थ्योरी एंड प्रैक्टिस भेजा था। उससे ऊपर गुड इवनिंग के बाद ओह सॉरी सर, सॉरी। अस्सलाम।